Hello student, welcome to the class. Uh, Today we are learning about ratio and proportion, and in yesterday lecture I have told you what is ratio. Ratio is nothing but comparison of two quantities, and both the quantities, the units of both the quantities must be same. If the units of both the quantities are different, then we cannot compare that quantity. And we know that if there is a ratio called A ratio B, this is written as this is written A ratio B, and we read it as A ratio B. This symbol is called ratio. This polar ratio, this polar symbol, two dots up and down, is called ratio, and the A, number A, which is first term, is called antecedent, and the B is called consequent of the ratio. Now moving further, we have learned about what is simplest ratio. Now we move further and find what is equivalent ratio. So equivalent ratio is nothing but expressing any ratio in another form, and the value of that ratio is same. The value does not change, but the expressing that ratio, but the first term and second term changes, but the first term and second term changes, but the value does not change. This is called इक्विवेलेंट रेशियो. जैसे अगर हमको एक रेशियो दिया है 5:3, तो इस 5:3 का अगर हम इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना चाहें, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिस तरह से फाइंड किया जाता था, उसी तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो. क्योंकि किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमको पता है. तो 5:3 को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/3. अब 5/3 को अगर हम इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना चाहें तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं. अगर दोनों के दोनों नंबर प्राइम्स नंबर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों प्राइम्स हैं, तो मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं. और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हम डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं. तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो अगर फाइंड करना है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 3 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बट वो दोनों नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए. वो दोनों के दोनों नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6. तो ये जो रेशियो है ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा 10:6. तो 5:3 को कन्वर्ट हमने कर दिया 10:6. अगर एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे 5/3 को हम लिख सकते हैं 5/3, दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20/12, और ये रेशियो बदल के हो जाएगा 20:12. तो इस तरह से रेशियो 5:3 जो है इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो जाएगा, एक इसका इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा 10:6, उसका दूसरा से इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा 20:12. अब इक्विवेलेंट रेशियो लिखना सबको आ गया. अब इक्विवेलेंट रेशियो लिखने के बाद एक और चीज आती है जो सब में कॉमन है. सारे के सारे जो हमने पढ़े थे, फ्रैक्शन पढ़े थे, डेसिमल पढ़े थे, अब रेशियो में भी वो चीज कॉमन हो जाएगी, और उसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ द रेशियो, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. तो कंपैरिजन ऑफ नंबर हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल. अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियो. कंपैरिजन ऑफ रेशियो मीन्स इफ वी हैव गिवन 2 or more than 2 ratios, then which ratio is bigger and which ratio is smaller, or both the ratio is same or not. अगर हमको 2 रेशियो दिया है तो कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों के दोनों रेशियो क्या है, सेम है, इसी को ही क्या कहा जाता है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो. कंपैरिजन ऑफ रेशियो. अब किसी भी रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं, हमने पहले भी इसको कंपेयर किया था. जिस तरह से फ्रैक्शन को हम कंपेयर करते हैं, उसी तरह से हम रेशियो को भी कंपेयर कर सकते हैं. अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 रेशियो दिया है, 5:3 एंड 4:3, और 6:4. हमको 2 रेशियो दिया है, एक रेशियो 5/3 और दूसरा रेशियो 6:4. तो
तो इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जो हो जाएगा 5/3। इसको हम लिखेंगे 6/4। नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ का डिनोमिनेटर 4 है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। इसी मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो इसका अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे 3 and 4 का, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 12। अब आगे हम क्या करेंगे, जो नंबर्स या डिनोमिनेटर्स हैं, इन डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम के इक्वल करेंगे। अब उस एलसीएम के इक्वल करने के लिए या तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। नॉर्मली मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। तो 5/3, इस 3 को अगर हमको 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में 4 से करना है तो न्यूमरेटर में भी 4 से करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इस जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में भी 3 से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12। ये है 20/12, ये 18/12। अब इन दोनों में हम देखेंगे, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं, और लाइक फ्रैक्शन जब कोई चीज़ हो जाती है तो जो न्यूमरेटर हमको अलाउ करता है, जो न्यूमरेटर कहता है उसी की बात हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर है 20, जो ग्रेटर दैन है 18 से, तो इसका मतलब जो है ये जो फ्रैक्शन है हमारा ये क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब जो 5/3 है ये रेशियो क्या है, 6/4 से क्या है, ग्रेटर है। इसको कंपैरिजन करने से हमको ये चीज़ फाइंड होगी। तो इस तरह से किसी भी गिवन रेशियोज को हम कंपेयर कर सकते हैं, वो दोनों इक्वल है कि कौन सा रेशियो उसमें क्या है, ग्रेटर है, कौन सा रेशियो स्मॉलर है। तो इसके लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमको पता ही चल जाता है जो न्यूमरेटर हमको अलाउ करता है वही चीज़ क्या होती है, मान्य होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो और कंपैरिजन से जुड़े हुए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि किसी भी दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे क्या दिया हुआ है, फिर हम देखेंगे हमको कुछ एज्यूम करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर एज्यूम करने की ज़रूरत है तो हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन को। उसके बाद हम फाइंड करेंगे जो हमारी वैल्यू है, जो हमको फाइंड करना था वो फाइंड हुआ कि नहीं फाइंड हुआ। आगे मूव करते हैं। सो हियर इज ए क्वेश्चन, इन ए सर्टेन रेसिपी रेशियो ऑफ फ्लोर टू शुगर इज 3:2। तो शुगर और फ्लोर का रेशियो, कोई भी एक रेसिपी है जिसमें शुगर और फ्लोर का जो रेशियो है वो है 3:2। इफ यू नीड 600 ग्राम्स ऑफ शुगर, अगर उस रेसिपी को बनाने के लिए हमको 600 ग्राम शुगर की नीड है तो हमको कितने ग्राम ऑफ फ्लोर की जरूरत पड़ेगी। तो उस रेसिपी में हमको फ्लोर कितना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी हमको दी हुई है उसको हम राइट कर लेंगे। जैसे गिवन में क्या लिख लेंगे, रेशियो ऑफ फ्लोर टू शुगर, that is 3:2. While solving any word problem, you have to write given and other quantity in words only. Do not solve directly. Write what is given in words. Write what we need to assume in words. Write what is according to question is given, and in last write the answer in words only. So given ratio of flour to sugar is this. Now we don't know how much sugar is and how much
floor are there in that recipe. So we assume that quantity of let quantity of flour is equal to 3x gram and quantity of sugar is 2x grams. We have assumed that the quantity of sugar is this and the quantity of flour is this. Now according to question, if we go according to question, we have assumed that quantity of sugar is 2x, but in that question the quantity of sugar is given that is 600 grams. So we compare both 2x and 600 and we write 2x equal to 600 grams. 2x equal to 600 grams. Now moving on, this is a linear equation and we have learned in previous chapter into algebra how to solve a linear equation. To solve a linear equation, we move the coefficient of x, that is 2. We transpose that on the right side and that will become 600 divided by 2. If we divide, we get the value of x equal to 300. This is not the value quantity of sugar. This is not the quantity of flour. This is the value of x. Now moving on, we have value of x equal to 300 and the quantity of sugar is 2x. We have to need how many grams of flour do you need. So here we write the quantity of flour needed is equal to how much? 3x. So here we write 3x, but we have value of x equal to 300. So the quantity needed flour is 900 gram. So the quantity of flour is 900 gram to make that recipe. If we have 600 gram of sugar to make that recipe, so we need to 900 grams of flour to make that recipe. This is all the question. Look at how to solve the question. First, what we write? We write the given quantity, the given ratio. Then we assume that both the quantity as in terms of x. Then we move according to question and we find what is quantity is given, what quantity is given, what term is given, and there we find the value of x, and then in last we find what quantity we needed. In that case, the quantity we needed is quantity of flour. So here we have find that what is quantity of flour, that is 900 grams. So if we go to another question, the question I will write the question and look at the ones and then solve that question. Here I have written one more question. Look at the question once, read it, and then we solve the question. The question is the ratio of kids to adults. So here is given the ratio of kids to adults in a party is 5:3. The ratio of kids to adults in a party is 5:3. If there are 18 students at the party, if in a party there are 18 adults, then how many kids are there in that party? We solve this question. So what we do? First we write what is given in that question. In the question, the ratio of kids to adult is given. So we write ratio of kids to adult is 5:3. Ratio of kids to adult is equal to
5:3. Here we first write kids and then we write adult, because if we change the terms, the ratio must be changed. Now in second step we assume that how many number of kids and how many number of adults in that party. So here we assume let number of adults or number of kids is equal to 5x and number of adults is equal to 3x. Why? Because the first term is for adult, the first term is for kid, and the second term, that is consequent, is for adult. Now if we move further, we find the value of x, and then in last we find how many kids are there in that party. So what we write? We go for and write according to question. We have assumed number of adults is 3x, but in the question it is given that the number of adults in the party is 18. So we compare both quantities 3x and 18 and we equate that. So here we write number of adults is equal to 18, but we have assumed that the number of adults is 3x, so here we write 3x which is equal to 18. Now 3x equal to 18 is a linear equation, and we know that how to solve that linear equation. Here we transpose the coefficient of x to the right hand side, and it will become 18 divided by 3. If we divide 18 by 3, we get the value of x is 6. So this is value of x. This is not the value number of adults, and this is not the value of kids. So moving on, we have to find how many kids are there in that party, and we have assumed that the number of kids in the party is 5x. So here we write number of kids which is equal to 5x, and we have find the value of x is equal to 6. So here we write 5 into 6 which is equal to 30, and in last we write the answer in words as so number of kids in the party is equal to 30. So there are 30 kids in that party, and there are only 18 adults in the party.